Hello students, our next topic is retrieving data from analysis services, that is unit 10. First of all, creating perspective. A cube may have multiple viewpoints. Generally, each viewpoint displays a subset of the cube that is related to wide separate subject area or that is needed by a group of users. बेसिकली जो क्यूब होता है उसके काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. जनरली जो व्यू पॉइंट्स होता है क्यूब का, ठीक है, वो क्या है, एक वाइड स्प्रेड एरिया जो होता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ यूजर्स होता है उससे रिलेट करता है, ठीक है. देन टू डिस्क्राइब एंड विजुअलाइजेशन एप्लीकेशंस, अ व्यू पॉइंट अपीयर्स जस्ट लाइक अ क्यूब. जो अगर आपने इसको डिस्क्राइब करना है और विजुअलाइजेशन करना है तो जो क्यूब होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, व्यू पॉइंट होता है. सो how you cannot request security to the viewpoint, and if you want to create a perspective, how you can create it. So to create a perspective for models that contain many subject, basically perspective में क्या होता है, जैसे सेल्स, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो हर एक कोई मतलब अलग अलग उसके पॉइंट्स होते हैं. तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी रह जाता है क्योंकि ये क्यूब का एक तरह से सबसेट मॉडल होता है. तो एक व्यू पॉइंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है कि कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रह जाता है. सो हाउ यू कैन परस्पेक्टिव, ट्री व्यू में जाना है, वहाँ पे आपने परस्पेक्टिव पे जाना है. देन you have to go to edit perspective dialog box, then click clear all. If you want to create a purchase order detail entry, you have to select that check box and you have to select all the मतलब आपको जो उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनको select करना है, ठीक है. Later the product entry, clear the check box and then check box again, then click OK. To rename the perspective, to see the new perspective, scroll down the bottom of the list view. The last item listed in call new perspective. Right click new perspective, then click rename. Type products, purchases and the file name, then save all. Multi-dimensional expressions queries. MDX जो expressions होते हैं that is different from MDX queries. Expression is a formula that calculate a single value. Expression क्या होता है कि that is a simple formula that is used to calculate a single value. और जो क्यूरी होते हैं वो एक कमांड होता है जिसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं. So the cube browser in a cube designer like other describing data visualization application utilized with analysis services allow you to drag and drop dimension and measure and generate MDX queries. So you can use these tools to create accounts without compromising any MDX query of your own. Learning MDX will permit you to take advantage of some of more advanced features of analysis services to create the data set you need. You can use MDX queries to understand and debug complex MDX sign. The most widespread used MDX query is exact value for lab cube to populate. मतलब जो MDX query होता है इसमें क्या होता है कि you can extract value from the lab cube and cube has a dimension and but report does not. Report have axes and axes can include members from one dimensions. Select statements like the following syntax. Select statement use the select from and where clause. MDX select statements support optional syntax such as with the keyword. The use of MDX function ability to return the value of specific cell and a part of query. So that is the MDX expression. Excel with analysis services. You can use analysis services. Use data source for Office Excel 2007 pivot table. Pivot chart characteristic. The Excel 2000 pivot table characteristic permit you to create a reports, cross-tab reports that you can let you pivot and filter at any removed dimensions. Drill down, drill lab, ठीक है. You can use Excel 2005 feature to create powerful visualizations. And to connecting Excel to analysis services environment, select the analysis services drop down data tab, then from other data source down, then walk through the data connection, then cube and carousels. You should now have a connection to a cube with Excel and pivot table ready. Click add trusted data provider to the top of the list and then enter. You now set you can publish the work to Excel services. You can able to view, interact, refresh data, ठीक है. If you want to a connection to a cube with Excel, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से जैसे कर सकते हो. यहाँ पे जैसे उन्होंने शो किया हुआ है कि if you want to Excel analysis with analysis services like this one to from SQL Server, ठीक है, from data connection wizard and then click add trusted data provider at the top of the list, ठीक है. Trusted data provider you can enter and now set the publisher for workflow access services. तो आप उस चीज़ को व्यू कर सकते हो. तो
जो पाइवट टेबल होता है उसमें भी आपको क्या है कि अगर आपने क्या है कि प्रोडक्ट वाइज देखना है डाटा, तो वो भी आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो. दैट इज़ द विच इज़ द बेस्ट फीचर to analyze the data, and that's all about in this unit. I hope you understand it. Thank you.